Okay. Good evening to all of you. Okay, dear students, my name is Anil Kalambe, and today we are going to learn a new topic, that is chemical kinetics. Okay, so before going to learn chemical kinetics, every chemist has to know three types of questions, or we can say the answer of three types of questions. That is, first is the feasibility of the reactions. Okay, so I'll write here, that is feasibility of reactions. Okay, that is the first point. Okay, so what is meant by feasibility of the reactions? So feasibility का मतलब क्या होता है कि कोई reactions एक particular given set of conditions में होगी कि नहीं होगी. ओके, तो ये इसका जो आंसर है ये कौन देता है? दैट इज द केमिकल थर्मोडायनामिक्स. तो इसके बारे में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, दैट इज केमिकल थर्मोडायनामिक्स. ओके, सो केमिकल थर्मोडायनामिक्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. इट मींस इफ the value of delta G is less than 0. Okay, it means delta G should be negative. क्या होना चाहिए स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए? डेल्टा जी रिएक्शंस क्या होगी? स्पॉन्टेनियस होगी. और हम बता सकते हैं कि दैट रिएक्शन इज फिजिबल रिएक्शंस. ओके, सो फिजिबिलिटी ऑफ रिएक्शंस ये कौन डिसाइड करता है? So that is the chemical thermodynamics. It means if delta G is less than 0, then a reaction is feasible. Okay, another question, every chemist must have to know the answer of that another question, that is the extent of reactions. Okay, so just okay, yes, ठीक है. So extent of reactions. सो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, ये जो प्रॉब्लम्स है ये हम किस में फाइंड आउट करते हैं? दैट इज द केमिकल इक्विलिब्रियम्स. ओके, सो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है एक्चुअली? सो एक्सटेंट, ओके, सो आई विल राइट इक्विलिब्रियम. ओके, सो एक्सटेंट ऑफ केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या होता है कि हाउ इट विल गो अप टू द हाउ इट लॉन्ग्स. ओके, मतलब कितना देर तक वो चल सकता है, या फिर कितना एक्सटेंट तक हो जा सकती है, या फिर कुछ आफ्टर सम पॉइंट्स के बाद बैकवर्ड आ सकती है, या फिर कंटिन्यूअसली फॉरवर्ड ही जाएगी. सो ये जनरली हम क्या देखते हैं इक्विलिब्रियम में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हाउ एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस is going on. Okay, और first is the feasibility of a reaction, and third question जो होता है, that is the third questions, speed of a chemical reactions. Okay, so every chemist must has to know what is the speed of chemical reactions. Okay, speed of chemical reactions. So जो भी हमारे पास केमिकल रिएक्शंस होती है तो उनकी स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से वो हो रही है. मतलब कुछ रिएक्शंस फास्ट होती है, कुछ रिएक्शन स्लो होती है, कुछ रिएक्शंस का जो रेट होता है वो काफी मॉडरेटली होता है. सो स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, सो दिस स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स. ओके, सो केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शंस. ओके, इट मींस actually, what is meant by chemical kinetics? So chemical kinetics is the branch of physical chemistry which deals with the study of rates of reactions and their mechanisms. Okay, that is called chemical kinetics. Okay, so we know the kinetics. Kinetics means what? Something is movement. Okay, in physics you have already learned this word, that is kinetics. So kinetics is nothing but the movement, something is movement. Okay, so speed of a chemical reactions. So this is the just general idea, or we can say just introductions, but some thermodynamics having some limitations also. Okay, so why there is need to study this chemical kinetics? Because chemical thermodynamics having some limitations, or we can say just I will write here. So what is the chemical what are the limitations of chemical thermodynamics? Okay, just chemical thermodynamics says the whether the reaction will happen or not in a given set of conditions. Okay, but chemical kinetics says
the speed of chemical reactions, how it goes. Okay, it means faster or slower or that. For example, we can say here example. Okay, so diamond can be converted into graphite. This is feasible reaction according to chemical thermodynamics. So what chemical thermodynamics says, okay, so this reaction shall occur, okay, but it does not tells its rates of the reactions, how it goes, matlab, how it will take how much time to complete the reactions. So it fails to explain the rates of the reactions. Okay, so according to thermodynamics, diamond can convert it into graphite. Okay, but according to chemical kinetics, okay, so it takes too much time because this process is very slow. Okay, so most of the people thinks diamond is a forever, so we cannot convert into the graphite. Okay, so that is another limitations of the chemical thermodynamics. Okay, that one. Next one is the in this chemical kinetics, not only we will study not only rates of the reactions, but what are the factors which are affecting on the chemical kinetics. Okay, that will also we will learn in these chapters. Okay, so most of the factors, that is factors affecting on rates of reaction. So that is, first we will see the concentration is one of the factor. Then another is the temperature is also one of the factor. Then we will see the pressure. Okay, so how pressure is affect on the rate of the reactions. Then we can see that is a catalyst also. Okay, so how catalyst affect on the rate of the reaction. So these are the factors. Okay, so these factors also affect on the rates of the reaction, we will study. And later on, some elementary ideas of the collision theory. Okay, so how molecules collide to each others and how they can proceed reactions. Okay, so after that we will see the some collisions theories. Okay, elementary ideas of collisions theories. Okay, but let first understand what is the rate of reactions. That is the main important factor. Okay, so I will write here rate of reaction. So how will we define the rate of reaction. So before understanding the rate of reactions, first we will understand the types of chemical reactions on the basis of type speed. Okay, speed of chemical reactions. Okay, so we can classify types of chemical reactions on the basis on the basis of speed. Okay, speed पे डिपेंड होती है कुछ रिएक्शंस और स्पीड के हिसाब से. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट वी विल राइट हियर फास्ट रिएक्शंस. ओके, so which of the reactions they are very fast, okay, or they can occur very instantly. Okay, so most of the ionic reactions. Okay, so ionic reactions are very fast. Ionic reactions are happen very fastly. For example, okay, if you take a silver nitrate solution, okay, aqueous silver nitrate solution plus sodium chloride, that is also aqueous. Okay, so we know, so Ag having a plus one charge, nitrate having a minus one charge. Similarly, sodium having plus one charge and chloride having a minus one charge. So we this reaction already we learned in a 10th class. Okay, that is called the double displacement reaction, or we can say precipitation reaction. So whatever the opposite charges, they just exchange with each others, and it will form some precipitation. Like this is the solid product, so it gives the precipitate of AgCl silver chloride and plus sodium nitrate. So this reaction happens quickly, instantly. Okay, जैसे ही हम दोनों अलग अलग टेस्ट ट्यूब में लेंगे, both are colorless. Okay, so when we put together, so they can form instantly white precipitate. Okay, this is actually PPT, that is white PPT, white precipitate.
Okay, so this is the ionic reaction. So generally ionic reactions are very fast. Okay, they can occur instantly. Okay, some reactions are very slow. Okay, slow reactions, we can write slow reactions. Second types of reactions are slow reactions. Okay, for example, we can say rusting of iron. Okay, rusting of iron. Okay, so हम जनरली हमारे आसपास देखते हैं कुछ आयरन रॉड्स वगैरह होते हैं या फिर कुछ आयंस के पॉट्स वगैरह होते हैं या फिर जो भी हम देखते हैं ब्रिजेस वगैरह को काफी पुराने अगर ब्रिजेस आप देख सकते हो तो जो भी आयरन रॉड्स होते हैं वो रस्ट होते रहते हैं ओके बट रस्टिंग ऑफ आयरन इज अ वेरी स्लो प्रोसेस ओके it does not happen fastly okay it's very slow process okay so we can say it's very slow process that is another type of reaction that is called the moderate rate okay moderate rate rate of reactions मॉडरेट रेट मतलब ना कि ज्यादा फास्ट है ना ही स्लो है ओके थोड़ा सा बीच में रेट्स होता है सो जनरली these are the molecular reactions molecular reactions means what generally organic reactions okay तो जितने भी organic reactions होती है तो organic reactions मॉडरेटली उनका रेडियम रेट वाले रिएक्शंस होते हैं तो इसमें एग्जांपल आप देख सकते हो दैट इज इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ओके इन्वर्जन ऑफ केन शुगर ओके सो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर है या फिर अनदर एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर ओके this is first point second point is the hydrolysis of ester hydrolysis of ester okay this is also a pseudo first order reaction we will learn in a next classes okay so inversion of cane sugar and hydrolysis of ester these reactions having a moderately rate okay so on the basis of speed reaction we can classify this into very fast very slow or we can say moderately reactions okay and we already given one examples here okay but actually what is the rate of reaction main point our is what is the rate of reactions okay so rate of reaction actually क्या होता है how will we define okay so जैसे कि हम speed of vehicles को एक्सप्लेन कर सकते हैं है ना सो स्पीड ऑफ व्हीकल्स कैसे लिखते हैं हम जनरली व्हाट इज मीन बाय स्पीड ऑफ अ व्हीकल सो इट इज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटीज ओके पर यूनिट टाइम सिमिलरली वी कैन से rate of reactions means what rate of reactions so we will define rate of reaction it is the change in concentration change in concentration of reactant or product per unit time per unit time okay so with respect to time if there is a change in concentration of reactant or product okay so we can say that is the rate of reactions but more specific okay if you want to a more specific rate of reaction it means what okay so if you consider a hypothetical reaction that is r changes to p okay here r is the reactant and p is the product okay so generally we know when reaction start जब रिएक्शन स्टार्ट होती है तो रिएक्टेंट का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो धीरे 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 डिक्रीज होते जाता है ओके और प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम्स क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होते जाता है ओके सो मोर स्पेसिफिकली वी कैन राइट हियर सो डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट with per unit time or we can say increase in concentration of the product per unit time that is called the rate of the reactions okay so we can write like this okay so decrease in concentration of reactant per unit time per unit time or secondly we can say increase in concentration increase in
concentration per unit time. Okay, so this is the theoretically we just define, but suppose let's suppose this is the reactions. Okay, और इसी reaction को हम extend कर सकते हैं. So जैसे कि हमने कहा starting में, so R changes to P. This is the one hypothetical reaction we can consider. Okay, let's suppose let concentration of R is 1 and concentration of P is 1 at time T1. Okay, so we can say here, what is this square bracket indicates? This is indicates the molar concentrations. This indicates molar concentration of reactant or product. Okay, whatever the that is जो भी स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिखा है, सो क्या होता है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन या फिर प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन होता है. ओके, सो मोलर कॉन्सेंट्रेशन, मोलर का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी. जैसे कि आप लोगों को पता है, सॉल्यूशन में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी, लाइक दिस. ओके, सो मोलैरिटी मींस मोल्स पर लीटर. ओके, ये ऑलरेडी हम को पता है, मोल्स पर लीटर जो भी होता है, या फिर जस्ट मोल्स लीटर हम लिख सकते हैं, जो भी है. ओके, सो नेक्स्ट वी कैन राइट सिमिलरली, लेट्स सपोज R2 is the concentration of reactant and P2 is the concentration of the product at time T2. Okay, that is the correct. Okay, so जैसे कि हमने लिखा, R1 is the concentration of reactant, P1 is the concentration of product at time T1. Similarly, R2 and P2 are the concentration of reactant and product at time T2. Okay, so we can write here change in time, that is delta T. Okay, so it nothing but final time minus initial, that is T2 minus T1. Similarly, we can write here change in concentration of reactant is equal to R2 minus R1. Okay, similarly we can write here, okay, so change in concentration of product is equal to concentration of P2 minus concentration of P1, like this. Okay, so just 1 minute. Okay, so yes, we can write P2. Oh, sorry again, इसको थोड़ा सा और ये करते हैं. Okay, so just write here P2. Okay, similarly, so change in T, that is delta. Delta किस लिए यूज करते हैं हम, डेल्टा इट टेक्स फॉर चेंज. ओके, समथिंग इज चेंज, और चेंज क्या होता है, जनरली फाइनल माइनस इनिशियल हम करते हैं. ओके, सो दिस इज द चेंज. सो इन टर्म्स ऑफ दिस वी हैव टू एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शंस. ओके, तो सिमिलरली वी कैन राइट द रेट ऑफ disappearance or appearance of reactant or product. Okay, similarly, okay, so we can write here rate of disappearance of reactant R. Why we write here disappearance? Because reactant क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, धीरे धीरे डिक्रीज होते जा रहा है. सो वी कैन राइट हियर, सो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर इज इक्वल टू माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम. सो व्हाट दिस माइनस इंडिकेट्स, ओके, ये माइनस क्या इंडिकेट करता है, तो माइनस का मतलब क्या होता है कि जो रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है. वो माइनस हम कैलकुलेशन में मतलब उसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे. ओके, सो इफ वी मल्टीप्लाइड बाय द -1, सो वट एवर द रेट ऑफ रिएक्शन विल गेट द पॉजिटिव वैल्यू. ओके, सो रेट ऑफ रिएक्शन ये कभी भी पॉजिटिव ही होती है वैल्यू, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होती है. बट ये जो माइनस साइन इंडिकेट क्या करता है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है रिएक्टेंट का. सिमिलरली वी कैन राइट हियर रेट ऑफ appearance of product P. So we can write here positive. So what does positive means? Okay, it means concentration of product get increases with per unit time. Okay, similarly क्या हो रहा है, rate of appearance of P. Appearance का मतलब है
अपीयर होना, ओके, प्रोड्यूस होना, ओके। सो इट मींस जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है यहाँ पे, इंक्रीज हो रहा है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ओके। सिमिलरली वी कैन राइट हियर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस, ओके। सो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस अगर लिखना है आपको, सो वी कैन राइट हियर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू वट एवर द माइनस या फिर ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, okay, because we have a reaction like this, R changes to P. So if you want to write a overall rate of reaction, so we can write here minus change in concentration of R divided by delta T is equal to change in concentration of P divided by delta T, like this. So this is the overall rate of reactions, or this individual we can say average rate of reaction. If we know the change in concentration of reactant and the change in time, so we can calculate the average rate of reaction. And if you know the change in concentration of product, or whatever the time change in time, so we can also call the rate of reaction in terms of rate appearance of P, okay. So this is the rate of reaction actually definitions, okay. But there are actually two types of rate of reactions, okay. One is the average rate of reactions and another is a instantaneous rate of reaction. So first we will understand what is average rate of reactions, okay. So there are two types of rate of reaction. So first we will understand average rate of reactions, okay. So generally we can write simple R A suffix V, okay. Or we can just explain with the graphical method also, okay. So whatever the average rate of reactions or instantaneous rate of reaction, so average का मतलब क्या होता है, एक particular period of time के लिए जो भी rate हम निकालेंगे, that is called the average rate of reaction. And another point is there, that is second point, so that is instantaneous rate of reaction. सो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम पे, एक एग्जैक्ट टाइम पे, दैट इज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो भी हम इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, दैट इज कॉल्ड द that is we can write here INST, okay. That is rate of at instant positions, okay. It means whatever the change in time approaches to zero, okay. इसका मतलब क्या होता है, so this delta is for the large change, okay. But average rate of reaction, instantaneous rate of reaction, we can write in this way, D, small d. So this small d, it indicates the small change, very small change, okay. So we can write suppose minus D change into R divided by dt. So this equation indicates the instantaneous rate of reaction. So instantaneous rate of reaction का मतलब क्या होता है, at particular instant, एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट इंस्टेंट पे या फिर पर्टिकुलर पॉइंट पे हम क्या निकाल सकते हैं, इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं. और जो भी केमिस्ट होते हैं, तो केमिस्ट वांट्स टू नो द generally instantaneous rate of reactions, okay. And average rate of reaction we can write in this way, so that is the minus change in concentration of R divided by delta T, okay. So we will explain, or we can understand this average rate of reaction और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल, ओके. सो ग्राफ से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, या फिर ग्राफ से हम क्या इसको समझ सकते हैं कि हाउ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट और हाउ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन वी कैन कैलकुलेट, ओके. सो आई विल ड्रॉ हियर ग्राफ, सम ग्राफ्स, ओनली टू ग्राफ्स आर देयर, okay. So first I will draw the graphs, concentration of reactant versus time, okay. So in our y-axis we can take here concentration, okay, sorry, just let me, okay. So I will write here once again, okay. This is x-axis, this is y-axis, okay. So we can take here concentration of reactant, or just R we can write here, and at the y-axis we can take here time, okay. Let's suppose this is the initial concentration of reactant R naught, okay. So what is the R naught here, so this is the initial concentration, we can write here initial concentration
of reactant R, whatever the reactant R. Okay, so when time passes, okay, so जब times चला जाएगा, धीरे 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 reactions happen होगी, तो जो भी initial concentration reactant का वो धीरे धीरे क्या होगा, just it gets decreases, okay, like this, downwards, slope will be downward. Okay, let's suppose here is the R1 initial concentration. Okay, initial is the 0, but R1 is the at time t1, and another we can take here, suppose R2 is the another concentration at time t2. This is the time we can write here t1, another is a t2 here. Okay, it means whatever this change, okay, so this is the change in R, concentration of R, okay, like this, and whatever this change, this is change in delta T. It means what are these particular area, or we can say that is the change in concentration of R divided by change in time. It means this is called the average rate. We can write here rate of average reactions. Okay, whatever. Okay, or we can write directly like this. So R2 minus R2 minus R1, okay, divided by minus T1. Okay, so this is the average rate of reaction. But suppose we want to calculate a rate of reaction at particular time. Okay, let's suppose this is the particular time. Okay, and we want to calculate the for this particular time के लिए हमें क्या करना है यहाँ पे, this is suppose this is time एक particular, so we can take here just slope, or we can say we can draw a tangent. Okay, and these tangents we can just okay, take a slope. Okay, it means whatever the this change, ये change क्या होगा, small change, because we can take here instantaneous rate of reaction, और ये जो change रहेगा, okay, so this change it nothing but the delta R, okay, d small d into R. Okay, or we can write here, just I will take another one. So this is the rate instant, okay, is equal to whatever minus change into concentration of reactant divided by dt, or we can write is equal to minus slope, because slope will downward, slope क्या हो रहा है, downward हो रहा है. तो ये जो टेंजेंट है, मान लो यहाँ पे पर्टिकुलर टाइम पे आपको अगर क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो दैट इज कॉल्ड, इट शोज द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं यहाँ पे स्मॉल चेंज लेते हैं. ओके, इट मींस वट एवर द डेल्टा टी अप्रोचेज द जीरो, ओके, कैपिटल डेल्टा जो होता है, तो तब हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन लेते हैं. ओके, सिमिलरली वी कैन एक्सप्लेन द ग्राफ फॉर द concentration of the product. This is the reactant, because reactant decreases, concentration of reactant decreases during the when time passes. Okay, so similarly we can explain concentration of product versus time. Okay, so I will just draw the another graph here. Okay, so let's see here. So this is the y-axis, x-axis. Okay, so y-axis and this is x-axis. So y-axis पे हम लेंगे concentration of P, that is product P. Okay, and here we can take here time. Okay, so this is x-axis. So हमें पता है कि हमें अभी देखा कि जैसे कि reactions में क्या हो रहा था, reactant changes to product. So reactant का concentration decrease हो रहा था, product का concentration increase हो रहा था. So what will happen here? So let's suppose this is the zero. Initially product का concentration क्या रहेगा, zero रहेगा, but after the some time, so it will go like this. Okay, it means concentration of product will get increases. Okay, so let's suppose we will take here another points. Okay, suppose this is the time t1 and another is the time t2. Okay, or sorry, this is the time t1. Okay, so here is the concentration p1 and here the concentration of p2. Here is the t1 and this will be here t2. Okay, like this. So okay, so whatever this portion, or we can say area, so it sorry, just previous yes,
So it indicates, I will take another color here. Okay. So it indicates the average rate. Okay. So average rate we can write here positive change in concentration of P divided by delta T here. Okay. So this is the average rate of reaction. But suppose we want to calculate at a particular point. Suppose, let's suppose here. Yes, here is the point. Okay. And we want to calculate the instantaneous rate of this time. Okay, so we can take here, say, same here we can draw the tangent. Okay, यहाँ पे हम क्या करेंगे, tangent draw करेंगे और एक यहाँ पे इस तरह से सॉरी थोड़ा सा ओके जस्ट okay, I'll take once again. Okay, suppose हाँ yes okay. सो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे जो टेंजेंट है, टेंजेंट इट मींस स्लोप. ओके, यहाँ पे क्या बन जाएगा, स्लोप बन जाएगा. ओके, और वी कैन राइट हियर डेल्टा टी और व्हाट एवर हियर डेल्टा चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉरी डी small d. Okay, or we can write here r instantaneous is equal to nothing but positive change in concentration of p divided by delta t. Okay, or we can write here is equal to positive slope. Slope will be the positive because slope कैसे जा रहा है, positive जा रहा है. So in this way we can explain instantaneous rate as well as average rate by the graphically methods. Okay, so अगर हमें graphically sorry instantaneous rate लिखना है तो हमेशा हम small d लिखेंगे और average rate अगर निकालना है तो capital delta t लिखेंगे. जब भी instantaneous rate अगर लिखने जाएंगे it means whatever the capital delta t approaches zero. या इसका मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हम क्या कर रहे हैं, कोई भी एक एवरेज इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे. ओके, और जनरली जो भी केमिस्ट होते हैं, जो भी रिएक्शंस पे स्टडी करते हैं, तो वो जनरली इंस्टेंटेनियस रेट का ही ज्यादातर उनको पता होना चाहिए, बिकॉज हर टाइम पे उनको रेट पता होना चाहिए कि कितना वो रेट ऑफ रिएक्शंस दे रहा है. सो दिस इज कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस और वी कैन से instantaneous rate of reactions. Similarly, in the next slide we can see unit of rate of reactions. Okay, so on the basis of this differential rate of reactions, okay, so we can just again draw, I will draw here. So like change in concentration of r divided by dt. So this is called differential rate law or differential equations. Okay, this is the differential equations. Okay, or average rate of reaction. Okay, sorry, instantaneous. Okay, this is the instantaneous rate of reactions. Okay, so suppose we want to calculate the unit of rate of reaction, rate of reaction, unit of rate of reaction. हमें यूनिट निकालना है. सो हाउ विल यू कैलकुलेट द यूनिट. ओके, यूनिट कैसे निकालना है. सो हमें पता है दिस इज द कंसंट्रेशन एंड वी नो कंसंट्रेशन हैविंग अ moles, that is moles per liter, or we can write moles per decimeter cube. Okay, mole per decimeter cube. Okay, और divided by time. Okay, so time generally हम किस में लेते हैं, सेकंड में, s. Okay, or we can write here second. It means what is the rate of unit of a rate of reactions. So it becomes moles per liter per second. Okay, this is a one type of unit, or we can write here mole per decimeter cube per second. Okay, this is the unit when the reactant and product they are in a solutions. Okay, or we can say in a molar concentration if they are present. But if the gaseous reaction is there, okay, okay, I will write here gaseous reaction. So gaseous reaction के लिए हम concentration क्या यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं partial pressure. Okay, we use here partial pressures and we know जनरली सो प्रेशर का जो यूनिट हम लेते हैं तो लेते हैं जनरली हम atmospheric pressures. Okay, so atmospheric pressure we just use. Okay, so we can write here atm
per second. Okay, so this is the unit of a rate of reactions if reactions are in a gaseous state or gaseous reaction. If reactions are in a solutions, or we can say molar concentration, then we can use mole per liter per second or mole per decimeter cube per second. Okay, so we will take one examples here or one numericals how to calculate rate of average rate of reactions. Okay, by the help of given some quantities. Okay, so we have one examples in text question है एनसीईआरटी बुक का है, so उसी को हम सॉल्व कर लेंगे. Okay, so 4.1. Okay, so in text question है हमारे पास, so उसी को हम सॉल्व करेंगे. Okay, 4.1. Okay, so let's see here. So what they have given, so for the reaction R changes to P. Okay, we have a reaction, they have given reactant R changes to P, and again they have given the concentration of a reactant changes from 0.03 molar to 0.02 molar in 25 minutes. It means they have given initial concentration. Okay, when reaction started, so उन्होंने बोला है कि initial concentration कितना है, 0.03 molar है, and it concentration reduces. Okay, reduces mean it's get final concentrations, we can write final concentrations, so it is a 0.02 molar, and we have a time 25 minutes. हमारे पास क्या है, टाइम 25 मिनट्स है, एंड द कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन यूजिंग यूनिट्स बोथ द टाइम minutes and seconds. Okay, so we have to calculate the rate of average. Okay, एवरेज रेट निकालना है, दोनों यूनिट में निकालना है. अब टाइम तो ऑलरेडी हमारे पास मिनट में है, उसको हम सेकंड में भी कर सकते हैं. सो अगर टाइम सेकंड में करना है तो 25 इंटू 60. ओके, तो ये सेकंड में हो जाएगा. सो दोनों यूनिट में हमें निकालना है. ओके, सो वन बाय वन वी कैन कैलकुलेट. ओके, so rate of average we can write here change in concentration of R divided by change in concentration of T, because average rate निकालना है हमें, so we can use here delta. Okay, so whatever the initial concentration that is negative, we can write here 0.03. Sorry, because we have to calculate change in R2 minus R1. Okay, in this way we have to calculate. So just yes, no problem. Okay, so we can take here 0.02 because final concentration minus initial concentration, because R2 minus R1 like this. Okay, minus here 0.03 divided by whatever the delta T. So initial time, this is the final time. Okay, but what will be the initial time, T naught? It will be 0 minute, बिकॉज जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तब टाइम क्या रहेगा, 0 रहेगा, तभी तो रिएक्शन स्टार्ट होगी. ओके, देन आफ्टर 25 मिनट्स मीन्स 25 मिनट्स इज द लास्ट टाइम, सो वी कैन टेक हियर माइनस 0 टू 25 टू 0 बिकॉज फाइनल माइनस इनिशियल होगा. ओके, सो जस्ट ओके, यस, सो 25 minus 0, it means just we can take as a 25 here. So 0.02 minus 0.03, it means it having a value minus. Okay, but minus minus क्या हो जाएगा, plus हो जाएगा, so it will becomes a 0.01 divided by so 25. Okay, so we can write here, we can take in a standard form. तो standard form क्या होता है इसका, 10 raised to minus 2 हो जाएगा divided by 25. Okay, so 1 by 25 it means how much. Okay, so 1 by 25 कितना हो जाएगा फिर, so we can write here again 1 by 25 into 10 raised to minus 2, so it will becomes a 0.04. Okay, 0.04 into 10 raised to minus 2, again we can take in a standard form. Okay, so 4, it becomes 4 into 10 raised to minus 4, and whatever the unit, so we know the unit, that is moles per liter per sorry, this is the minute. Okay, in minute, because we have to calculate both minute and second as well. Okay, so just take here
ओके, सो इट विल बी पर मिनट। ये अगर आ जाएगा आपका पर मिनट में। सिमिलरली वी कैन कैलकुलेट फॉर द सेकेंड ऑल्सो। सो जस्ट टेक दिस वैल्यू 25 into 60. Okay, so we will again calculate for the this one. So let's suppose 0 minus 0.02 minus 0.03 divided by 25 into 60, बिकॉज सेकंड में हम कन्वर्ट कर रहे हैं इसको। ओके, सो सिमिलर वही आ जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाय, अब इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, सो 25 into 60, again we have to calculate here, so 1 into 10 raised to minus 2 divided by 25 into 60। सो पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन करने के बाद सेम वही वैल्यू आ जाएगा। ओके, सो यहाँ पे आ जाएगा अगेन 0.04। ओके, बट पूरा ही कैलकुलेट कर लेते हैं, जस्ट 1 मिनट। ओके, ओके, सो इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 25 into 60 कितना हो जाएगा? 0, जस्ट टेक एज इट इज, एंड 25 6 आई थिंक 150। ओके, सो जस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो ये आ जाएगा 1500। ओके, सो वी कैन राइट हियर 10 रेज टू माइनस 2, और वी कैन राइट हियर 15 into 10 रेज टू 2। ये अगेन ऊपर चला जा सकता है। ओके, यस, सो ये आ जाएगा 1/15 into 10 रेज टू माइनस 4। ओके, बिकॉज नीचे अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ऊपर जाके नेगेटिव बन जाती है। ओके, अगेन सो 1/15 को हम लिख सकते हैं 0 पॉइंट, अगेन यहाँ पे 0 आ जाएगा, अगेन 0 का वैल्यू जाएगा, अगेन 0। सो 15 6 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ओके, यस, 15 6 90। ओके, सो समथिंग अगेन वैल्यू आ जाएगा कुछ ना कुछ 90, तो 10 अगेन देखेंगे तो 6 समथिंग के आसपास आ जाएगा, इंटू 10 रेज टू माइनस 4। ओके, इसको अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। सो वी कैन राइट हियर, 2 पॉइंट शिफ्ट कर दो, 1 and 2 हियर। सो वी कैन राइट 6.6 इंटू 10 रेज टू, अब 2 पॉइंट शिफ्ट करने की वजह से छोटी वैल्यू है, छोटी में से हमने बड़ी बनाई, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -6, और यहाँ पे आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैलकुलेशन इतना भी ज्यादा लेंदी नहीं था, बट ठीक है, वी कैन कैलकुलेट। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट इन अ मिनट एज वेल एज इन अ सेकंड। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन वी हैव टू वर्क। ओके, सो ऑप्शन के हिसाब से हमें वर्क करना है। ओके, अगर आपको सेकंड में बोला है तो सेकंड में करना पड़ेगा, मिनट में है तो एज इट इज मिनट में भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो in this way we can calculate average rate of reactions or instantaneous rate of reactions. Okay, so I think this is sufficient for today. Okay, so आज इतना ही खत्म कर देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे।